स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। कई बार देखा जाता है कि वी गो बोंकर्स, हम पागल हो जाते हैं, या कई बार हम एक्साइटमेंट की वजह से पागल हो रहे हैं, या कई बार बिकॉज वी आर गेटिंग सुपर एंग्री। हम किस प्रकार से इडियम्स के द्वारा या फ्रेजेस के द्वारा जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स पार्ट 45 में हम कवर करेंगे सम फनी येट इम्पोर्टेंट इंग्लिश इडियम्स टू एक्सप्रेस craziness, जब आप पागल हो जाते हैं। Starting on with the first phrase, go ballistic. Go ballistic ये एक बहुत ही important phrase है जिसका अर्थ होता है that you fly into rage. आप एकदम से गुस्सा हो रहे हैं, you're becoming very angry or excited. So that is when we use the phrase go ballistic. She went ballistic on hearing that we had broken her favorite crockery. जैसे ही उन्हें पता चला कि हम लोगों ने उनके नई क्रॉकरी, नए बर्तन के सेट को तोड़ दिया, she went ballistic. She went ballistic और go ballistic का अर्थ होता है जब आप पागल हो जाते हैं, when you go crazy with anger or excitement. That is when we can use the phrase go ballistic. Another phrase which is very common to express craziness is go bonkers. Go bonkers शब्द का अर्थ होता है या इस phrase का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा excited हो जाते हैं या you go crazy, you become very excited या पागल हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल ही चकरा जाते हैं. That is when we are using the phrase go bonkers. If it rains again in Delhi, we all will go bonkers as our clothes are not drying. पहले ही हमारे कपड़े सूख नहीं रहे हैं, अगर दोबारा से दिल्ली में बारिश हो गई, so we all will go bonkers. हम पागल हो जाएंगे, we'll go crazy because we're not having any clothes to wear now. So go bonkers, that means go crazy. Go bonkers की तरह ही एक और phrase जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं to express craziness is go bananas. Go bananas और going bananas का अर्थ होता है पागल हो जाना, going crazy, driving someone mad, किसी को पागल कर देना. That is the meaning of the word go bananas. They went bananas searching for the non-existing restaurant. They went bananas searching for the keys. So यहाँ पर go bananas का अर्थ हो जाता है going crazy, going completely mad. That is when we can use the phrase go bananas or go bonkers. यहाँ पर हमें याद रखना है that go bananas के important synonyms हो जाते हैं freak out. She was freaking out when she missed the bus. She was freaking out when she missed the metro and was again late for work. Go crazy. आप सिंपली कह सकते हैं that she went crazy on hearing the news, या go ballistic as we saw, or lose it. So यहाँ पर these are some important synonyms: go nuts, go batty, or go bonkers. These are very important synonyms of the phrase go bananas. Another phrase जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं that is go berserk. berserk शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा mad हो जाते हैं, angry हो जाते हैं और irritated हो जाते हैं. That is when we are using the phrase go berserk. I went berserk on figuring out that we had again missed the flight. So I went berserk. You went mad. You went crazy. Don't talk to me like that or else I will go berserk. मुझसे इस तरह से बात मत करो or else I will go berserk. That means I'll go crazy, I'll go wild, I'll get irritated. Go berserk. Another phrase जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं to express that you've gone crazy is go ape. Go ape शब्द का literal अर्थ होता है जिस तरह से go bananas और go bonkers है. Go ape का भी अर्थ होता है पागल हो जाना, crazy हो जाना. The kids go ape whenever they hear that tune. जैसे ही वो tune सुनते हैं बच्चे they immediately go crazy, they go ape. My mother went ape when I reached home late last night. My mom went ape. That means she went ape, she went crazy, she went mad at anger because of the fact that I was late. She went mad at me with anger because I was late. So go ape भी एक important phrase है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं. Moving on to another phrase, blow up. Blow up का अर्थ होता है get super angry. If my brother comes drunk, my parents will blow up. एकदम वो गुस्सा हो जाएंगे. That means you get super angry, super duper angry. If she changes the plan again, I will blow up. I will get super angry. बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा मुझे. I will blow up. I'll get mad with anger at her.
Moving on to another phrase that we have, go off the deep end. Go off the deep end का अर्थ होता है पागल हो जाना, going mad. Go off the deep end. That means you become extremely upset or angry. You're unable to control your emotions. आप अपने emotions के ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं. That is when we use the phrase go off the deep end. You're going off the deep end. बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, upset हो रहे हैं, angry हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि आपके emotions आपके control में नहीं रहते हैं. Shivam, after losing his job and his wife in the same week, went off the deep end and started drinking day and night. So going off the deep end का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या upset हो जाना. That is when we are using the phrase go off the deep end. Hit the roof. Hit the roof का अर्थ होता है कि आपको अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, and that too suddenly. When you suddenly become very angry, extremely angry, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है आपको और वो भी एकदम से suddenly आ जाता है. My parents will hit the roof if they come to know that my brother conducted a party last night. They will hit the roof. That means वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे. My parents will hit the roof if they come to know that my brother conducted a party last night. So hit the roof का अर्थ होता है when you suddenly become very angry. Another phrase that can be used, लेकिन ये एक slang phrase है और इसके और भी कई meaning होते हैं, that is pop one's cork. Pop one's cork का अर्थ होता है when you go crazy, एकदम से you become explosively angry. That is when we are using the phrase pop one's cork. Pop one's cork, एकदम से गुस्सा हो जाना. That is another slang phrase. Blow one stop. Blow one stop का अर्थ होता है जब आप अपना temper lose कर देते हैं और आप पागल हो जाते हैं. That is when we are using this phrase blow one stop. Oh man, my dad is going to blow his top when he comes to know that we forgot to buy his injections yet again. So my dad is going to blow his top. Blow one stop, that means एकदम से आप अपना गुस्सा खो देंगे, एकदम से आप अपना काबू खो देंगे अपने गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे. That is when we are using the phrase blow one stop. Blow one stop, lose one's temper. यहाँ पर हम लोगों ने कुछ important phrases को discuss किया जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं whenever you want to express that you're going crazy, you're going completely mad, either with anger or with rage. आप comment section में mention कर सकते हैं some of the ways that you will be using to express this anger, to express this craziness, या तो जब आप खुद पागल हो रहे हैं या कोई friend या कोई known. आप मुझसे Instagram पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से और इस particular वीडियो की cheat sheet Instagram से connect करके ले सकते हैं.